The railway station pulsed with restless energy. A symphony of human activity played out on its platforms. People rushed to catch their trains, vendors hawked their wares, and families embraced amidst the chaos. It was a place of constant motion, a microcosm of India itself. Trains hissing, their metallic bodies groaning as they pulled into the station, bringing with them stories of far-off lands and the promise of new beginnings. Each arrival and departure marked a transition, a shift in the lives of countless individuals. Crowds swirling like a human kaleidoscope, each person a unique piece of the vibrant mosaic. They pushed and shoved, their faces etched with determination, all driven by their own individual destinations. Voices echoing through the vast space, a cacophony of announcements, greetings, and hurried conversations. The air crackled with anticipation and the unspoken anxieties of travel. Ravi sat beneath the old banyan tree, its roots like ancient fingers gripping the earth, a silent fixture in the chaos. He was as much a part of the station as the tracks themselves. His days blurred together, each one a copy of the last, an endless loop of waiting and watching. The station's rhythm became his own, the arrival and departure of trains marking the passage of time. The sun would rise, painting the platform gold, casting long shadows that danced with the dust motes in the air. It was a daily spectacle, a reminder of the world outside the station's confines. And Ravi would claim his usual spot, the same patch of ground beneath the banyan tree, his silent observation post. His worn cloth spread before him, a silent invitation, his hand open, waiting for the kindness of strangers. Each coin represented a small victory, a momentary reprieve from the gnawing hunger. Feet hurried past, a relentless stream of humanity flowing around him, each footstep echoing his own stillness. Some noticed, their eyes meeting his for a fleeting moment. Most didn't, lost in their own worlds. He was part of the scenery, a quiet plea among the noise, a reminder of the forgotten corners of society. He knew the train schedules by heart, the rhythm of arrivals and departures etched into his memory. Watched reunions and partings, the bittersweet moments of human connection playing out before him. But his own story never changed, the chapters of his life remaining stubbornly fixed. Coins dropped rarely, just enough for a meal, a meager sustenance to keep him going. The station was a place of movement, a constant flow of people and trains, a symbol of progress and opportunity. But for Ravi, it was stagnation, a place where time seemed to stand still, leaving him behind. He watched children laugh, their carefree joy a stark contrast to his own quiet despair. Young people chased dreams, their eyes shining with hope and ambition, ready to conquer the world. Vendors shout with hope, their voices filled with the determination to make a living, to provide for their families. Everyone seemed to be going somewhere, driven by purpose and fueled by the promise of a better future. Except him, trapped in a cycle of waiting and hoping. Change felt impossible, a distant dream that seemed forever out of reach. This was his life, his lot, a predetermined path from which there seemed to be no escape. He existed, not lived, a mere observer in the grand theatre of life. The world moved on, and Ravi remained, a forgotten soul in a sea of faces. A still point in a river of motion, a silent testament to the enduring power of hope and the crushing weight of despair. He wondered if anyone ever truly saw him, if anyone recognized the silent struggle etched on his face. The thought of something different flickered, a brief spark of hope, then faded, extinguished by the harsh realities of his existence. For Ravi, hope was as distant as the departing trains, a fleeting glimpse of a world he could never reach. He waited day after day for something to change, for a miracle to happen, for his life to finally begin. He placed a coin, a small act of charity in the bustling station, on Ravi's worn cloth, joining the other meager offerings of the day. The coins formed a small pile, a testament to his daily struggle, and melted into the crowd, another face swallowed by the relentless flow of humanity. He disappeared as quickly as he had appeared. Ravi watched him go, his figure receding into the distance, the question echoing in his mind, a persistent hum beneath the station's cacophony. It was a question that challenged his very existence. Could he give? What did he have to offer? Trapped as he was in this cycle of need. He looked at his calloused hands, empty, save for the hope of a few coins.
The station's noise faded, momentarily muted by the weight of the stranger's words. The stranger's words lingered, hanging in the air like the scent of chai and diesel. For the first time, a flicker of doubt crossed his face. Ravi wondered if he could be more than a taker, if there was something within him that could be shared, something of value to offer the world. The seed of a new thought was planted, a tiny sprout pushing through the hardened soil of his resignation. He sat unsettled, the familiar comfort of his routine now replaced with a nagging unease. As the world rushed by, oblivious to the internal turmoil of the beggar at the station's edge. सोचिए, हर किसी के पास देने को कुछ होता है. मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, he mumbled, his voice barely audible above the din. The stranger smiled gently, a knowing look in his eyes. The question stunned Ravi, catching him completely off guard. No one had ever asked him that, not in all his years of sitting at the station. He stared, unsure how to answer, his mind racing to find a response. यहाँ हर दिन बैठे रहते हैं, कुछ मांगते हैं. क्या कभी सोचा है आप किसी को कुछ दे सकते हैं? Then a man stopped, his footsteps breaking the rhythm of the station. Unhurried, observant, his gaze lingering on Ravi with a quiet intensity. He didn't offer money right away. Instead, he asked, a question that would change everything. धन्यवाद भैया. One afternoon, as the sun cast long shadows across the platform, the station buzzed with festival crowds, a kaleidoscope of colors and sounds. Ravi sat in his usual spot, a familiar fixture in the station's landscape. Lost in routine, the days blurring into one another, coins clinked onto his cloth, a metallic symphony of survival. Was it true for him? A flicker of hope stirred. The idea of giving felt different, active, dignified. Maybe it could change how he saw himself. The seed began to sprout. Ravi wanted more than survival. He wanted self-respect. He lay awake, imagining what he could give. For the first time, he dreamed of being more. क्या कभी सोचा है आप किसी को कुछ दे सकते हैं? Ravi thought beyond hunger, beyond survival. He'd always seen himself as a taker, fated to beg. But the question challenged that belief. Could he, a beggar, actually give? He looked at his empty hands. What could they offer? Despair crept in, but the stranger's kind face returned to his mind. हर किसी के पास देने को कुछ होता है. The stranger's question haunted Ravi through the night. डर के बावजूद रवि के दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी. उसने हिम्मत करके कुछ फूल तोड़े. ये फूल जो अक्सर लोगों की नजरों से बच जाते थे, आज रवि के लिए कुछ खास थे. बहुत दिनों बाद उसके जीवन में उसने उम्मीद की हल्की किरण महसूस की. एक ऐसी किरण जो उसे अंधेरे से बाहर निकालने का वादा कर रही थी. क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या वे सोचेंगे कि एक भिखारी फूल दे रहा है? एक भिखारी फूल दे रहा है? ये तो अजीब बात है. अगली सुबह एक नई शुरुआत का वादा लेकर आई. रवि बेचैनी के साथ जागा. रात भर उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमता रहा था. रोज की दिनचर्या अब अलग सी लग रही थी. उस दिन में कुछ नया, कुछ अलग होने वाला था. अजनबी का सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था. तुम क्या दे सकते हो? उसने स्टेशन के चारों ओर देखा. एक जीवंत, भागदौड़ भरी दुनिया. हर कोई कुछ न कुछ दे रहा था. अपनी सेवाएं, अपना सामान, अपना समय. चाय वाला गर्माहट, एक कप चाय की राहत. अखबार वाला खबरें, दुनिया की जानकारी. जूते पॉलिश करने वाला चमक लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है. लेकिन वह खुद क्या दे सकता है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है. ये सवाल अब भी उसके मन में हल्की सी दस्तक देता रहा, उसे बेचैन करता रहा. तभी उसकी नजर अचानक स्टेशन मास्टर के दफ्तर के पास उगे हुए जंगली फूलों पर पड़ी. वे अपनी सादगी में भी कितने सुंदर थे. छोटे, रंगीन, अनदेखे. पर अपनी मौजूदगी से वे सब कुछ बदल रहे थे. वे फूल कुछ नहीं मांगते थे, बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं करते थे. फिर भी अपनी खूबसूरती सबको देते थे. अपनी खुशबू से लोगों के दिलों को छू लेते थे. रवि के मन में एक सोच आई, एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार. अगर वह भी एक फूल दे, क्या यह मुमकिन है? हर सुबह कुछ फूल चुनकर अपनी झोली में भरकर सिक्के के बदले एक फूल दे सकता है. शायद, बस शायद, वो भी कुछ दे सकता है. अब रवि सिर्फ भिखारी नहीं था, वह आदमी था जो फूल देता था. उसकी पहचान बदलने लगी. उसने खुद की इज्जत महसूस करनी शुरू कर दी. अब वह सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला भी था. देखो, फूल वाला भिखारी आ गया. महिला हैरान थी, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई.
कुछ ने फूल लिए, कुछ ने मना किया, लेकिन रवि डटा रहा। हर बार जब कोई सिक्का देता वह फूल देता, मुस्कुराने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। देने का एहसास अच्छा लगा। दिन हफ्तों में बदले। लोग अब उसे नोटिस करने लगे, उसके फूलों की उम्मीद करने लगे। धन्यवाद, ये आपके लिए है। उस दिन रवि अपनी जगह पर बैठा, पास में जंगली फूलों का गुच्छा। पहली बार किसी ने सिक्का दिया तो रवि ने हिचकिचाते हुए एक फूल बढ़ाया। उस आदमी ने रवि की चादर पर एक बड़ा सिक्का रखा, लेकिन असली मायना उस मुस्कान और सम्मान में था। रवि को पहली बार लगा उसकी भी कोई कीमत है। यह एक सच्चा गहरा पल था, सम्मान और स्वीकृति का। ये बहुत खूबसूरत है। आपने अपना जवाब ढूंढ लिया है, और वो भी बहुत प्यारा। साधारण वाक्य, लेकिन उसमें उसकी पूरी बदलती जिंदगी की गहराई थी। साहब, आपने एक बार पूछा था, क्या मैंने कभी कुछ दिया है? आज मेरे पास आपके लिए कुछ है। मानसून आ गया था। जंगली फूल और भी खूबसूरत हो गए थे। रवि के फूल देने का काम अब उसकी पहचान बन चुका था। वह अब सीधा बैठता, आंखों में चमक थी। लोग उसे स्टेशन का फूल वाला आदमी कहने लगे थे। एक दिन वही अजनबी फिर आया। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। अगर कभी लगे कि आपके पास देने को कुछ नहीं, रवि को याद कीजिए, सोच बदलिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। जब रवि ने सोचा मैं क्या दे सकता हूं, तो उसकी दुनिया बदल गई। लेने वाले से देने वाले तक का यह बदलाव उसकी असली ताकत बन गया। 6 महीने बाद स्टेशन वैसा ही था, लेकिन बरगद के पास अब एक बदलाव था। रवि अब ठेले पर फूल बेचता था। गुलाब, गेंदा, चमेली और वही जंगली फूल। फूल देने के उस छोटे से काम ने उसे दुकानदार बना दिया था। लोग उससे फूल खरीदने लगे, घर, मंदिर, त्योहारों के लिए। रवि ने मंडी से फूल लाकर छोटी सी दुकानदारी शुरू कर दी थी।